Hello everyone, welcome to today's lecture. I am Ashwini Lad and today we are going to discuss the design principles for connected devices, the next topic from Internet of Things. In the last video, we have studied what is Internet of Things, what are the different components of Internet of Things, how this technology is working, who are the people making this IoT possible, then some advantages, disadvantages, the huge number of applications of IoT. All these things we have studied in the previous lecture. I hope you understood all those concepts. If not, you can tell me. I will explain you again all these concepts in the coming videos. Today we are going to see some new concepts which are there in IoT or related to IoT in this topic, design principles for connected devices. So let's get started. So the very first concept is ubiquitous computing. So this term is given by Mark Weiser in 1990s. This was the person who has named this particular term, ubiquitous computing. So what is this? Ubiquitous computing means the technology that is present everywhere and works quietly in the background, embedded in everyday objects to make life easier. मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर जगह है, उसका प्रेजेंस हर कहीं पे है, हम लोग उसके साथ साथ चलते हैं, वो हमारे साथ साथ चलती है, हैंड इन हैंड द टेक्नोलॉजी एंड द यूजर्स आर वर्किंग टुगेदर, बट उसका हमें कोई भी ऐसे हेडैक नहीं है, वो सब काम एकदम पेशेंटली साइलेंटली कर रहे हैं बैकग्राउंड में. उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग, कि the technology which is present everywhere and works quietly in the background. So उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे अराउंड जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, जैसे कि स्मार्ट मार्केट है, जस्ट टैप करो अपना कार्ड और पेमेंट हो जाएगा. स्मार्ट नेटवर्किंग, जैसे कि हमारा सीसीटीवी कैमरा कनेक्टेड है हमारे मोबाइल से, हमारा स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है हमारे मोबाइल से, मोबाइल कनेक्टेड है लैपटॉप से, लैपटॉप कनेक्टेड है किसी सर्वर से. तो ये सारा जो है वो नेटवर्किंग है. और घर पे भी हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टीवी हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है, हमारा कैमरा मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है, सारी चीजें एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारे घर के अंदर भी एज अ स्मार्ट डिवाइसेस है. स्मार्ट वेरेबल्स, स्मार्ट वॉच है, देन स्मार्ट डिस्प्लेज जैसे कि टच स्क्रीन हो गया हमारा, स्मार्ट टीवी हो गया. और हेल्थ केयर में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, जैसे कि स्मार्ट बेड्स फॉर द पेशेंट्स, स्मार्ट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग जो हर जगह पे प्रेजेंट है और बैकग्राउंड में ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है. नेक्स्ट, द कंसेप्ट इज काम एंड एम्बियंट टेक्नोलॉजी. ये कंसेप्ट भी प्रीवियस कंसेप्ट से रिलेटेड ही कंसेप्ट है. काम टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि उसका नाम है काम, जो हमें कोई परेशानी नहीं दे रहा है. सो काम एंड एम्बियंट टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स क्वाइटली इन द बैकग्राउंड विदाउट डिस्टर्बिंग यू. तो ये यूबिक्यूअस जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे, जो डिवाइसेस है, दे आर द यूबिक्यूअस ऑब्जेक्ट्स, और उनको यूबिकॉम्स भी बोलते हैं हम लोग. और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है जो यूबिक्यूअस कंप्यूटिंग में हेल्प करती है, दैट कंप्यूटिंग दैट टेक्नोलॉजी इज काम एंड एम्बियंट टेक्नोलॉजी. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन अ सॉफ्ट एंड जेंटल वे, सो यू डोंट हैव टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग. तो ये अपने आप से काम करता रहेगा, जस्ट ये हमें रिमाइंड करेगा कि अभी उठो और सम एक्सरसाइज करो. जैसे कि ये वॉच है, ये हमें बोलेगा कि अभी बहुत देर से यू आर सिटिंग हियर, तो स्टैंड अप एंड डू सम एक्सरसाइज. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ काम एंड एम्बिएंट टेक्नोलॉजी. हमारा मोबाइल है जो सब काम अपने आप से टेम्परेचर सेंस कर रहा है, या फिर जो डेट एंड टाइम चेंज हो रहा है, जो भी अपडेशन आ रहे हैं वो अपने आप से बहुत सारी चीजें कर रहा है, हमें कम से कम उस पे के जो काम है उसमें इंटरफियर करना पड़ रहा है. सो all these examples are the examples of calm and ambient technology जो बैकग्राउंड में काम कर रही है, जो डिवाइसेस काम कर रहे हैं, एंड which do not need any
मच ह्यूमन इंटरवेंशन, कि हमारी उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही पूरा अपना काम कर रहे हैं. Now let us try to understand the principles of calm technology. टेक्नोलॉजी शुड रिक्वायर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ अटेंशन. मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसमें यूजर का अटेंशन कम से कम हो. मतलब ये वॉच मैंने पहन ली, मैंने छोड़ दिया, तो ये अपना काम अपने आप से कर रहा है, मुझे बार बार जरूरत नहीं है उसको रीसेट करो, ये करो, वो करो. It is working by its own. So that is the smallest possible amount of attention is required from the users. Now you see we are seeing these principles from the point of view of the developer. मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो वो यूजर्स के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, तो उस हिसाब से ये प्रिंसिपल्स हमें देखने हैं. टेक्नोलॉजी शुड इन्फॉर्म एंड क्रिएट काम. यूजर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है उससे वो पैनिक क्रिएट ना करे. इट शुड नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ पैनिक इन द यूजर्स माइंड कि उठो चलो एक्सरसाइज करो, तुमने एक्सरसाइज नहीं किया तो ये होगा वो होगा. ऐसे टाइप का पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए. द वॉच is just vibrating for some time, it's giving a message to me that you are sitting for a longer time, just stand up and do some exercise. Just as simple as that. It should not create any type of panic in the life of users. It should create only the calm. The third principle is technology should make use of the periphery. मतलब उसके आसपास जो भी चल रहा है उसका वो यूज करे. जैसे कि ये वॉच है, ये मे बी हार्ट बीट रिकॉर्ड कर रहा है, पल्स रेट रिकॉर्ड कर रहा है, मोबाइल से कनेक्टेड है, लैपटॉप से कनेक्टेड है, मोबाइल और किसी चीज से कनेक्टेड है, सर्वर से कनेक्टेड है. तो ये जो अपने आसपास की चीजें हैं उनसे कनेक्ट करके उनका मैक्सिमम यूज करे, पॉजिटिवली यूज करे. That is technology should make use of the periphery. Surrounding में जो भी है उसका वो positively use करे. Next, technology should amplify the best of technology and the best of humanity. देखो, अभी हम जो भी रिसर्च करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दिस रिसर्च इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमैनिटी. वो रिसर्च अगर सोसाइटी के लिए बेनिफिट नहीं दे रहा, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ऐसे रिसर्च का क्या काम. राइट. सो टेक्नोलॉजी शुड एम्पलीफाई, जो उसके जो बेनिफिट्स है वो एज पर द टेक्नोलॉजी तो हो ही हो, बट उसके बेनिफिट्स ह्यूमन बींग्स के लिए भी होने चाहिए. दैट इज अवर फोर्थ प्रिंसिपल. The fifth principle is technology can communicate but does not need to speak. That is, they're communicating with one another, but there is no need to tell it loudly to anybody. That communication should happen in some silent way, some silent means. Next principle is technology should work even when it fails. Like the example, when we are talking on video call or we are conducting a Google Meet, so sometime what happens, we are not able to see the video, but then also the meeting continues, the voice continues. So technology should work even it fails. Completely उसका shutdown नहीं होना चाहिए. अगर एक पार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरा पार्ट एटलीस्ट उसका काम करे और यूजर को जो सर्विस चाहिए वो बेस्ट पॉसिबल वे में वो सर्विस प्रोवाइड करे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द राइट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द मिनिमम नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मतलब हमारा कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हमें 4 चीजों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मेरे पास एक मोबाइल है तो मेरे 100 काम हो रहे हैं, मेरे कॉल्स हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, मैं वीडियोस देख रही हूँ, मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर रही हूँ, मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ, मैं नोट्स लिख रही हूँ. सो मेनी थिंग्स आई एम डूइंग बाय यूजिंग जस्ट वन डिवाइस. So the right amount of technology is the minimum needed to solve the user's problems. कि उसके लिए कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग्स लाने की जरूरत नहीं है. सिंप्लीफाई करो टेक्नोलॉजी को so that users can have the calm, the peace of mind while using that technology. And these are the principles that we should keep in mind when we are designing or developing any IoT based technology. The next concept is magic as metaphor. तो मेटाफर ये लिटरेचर का कंसेप्ट है, किसी एक चीज को दूसरे चीज का नाम दे देना. कि आज का मौसम इतना सुंदर है कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं कश्मीर में आया हूँ, ऐसे लग रहा है यहाँ पे कश्मीर है, या ये जगह स्वर्ग जैसी सुंदर है. तो ये हम लोग एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी को हम कंपेयर कर रहे हैं मैजिक से. ये टेक्नोलॉजी ऐसे कि मैजिक
So that is called as magical metaphor, कि हम लोग टेक्नोलॉजी को बोल रहे हैं मैजिक, इट्स वेरी मच मैजिकल। एक्चुअली है, चीजें ऐसी हो रही है कि जैसे लगता है मैजिक, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर लेते हैं। वीडियो कॉल पहले जो इतनी मुश्किल चीजें थी आज इतनी इजी हो रही है कि जैसे कि मैजिक। So that is why the new technology is called as magical. The new technology feels like magical at first. Metaphor means explaining one thing by comparing it to another similar thing. Simple. Now, magic is metaphor. Just I told you. So what the designers are doing कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कैसे होगा। तो ऑटोमेटिक डोर से फॉर एग्जाम्पल, तो लोगों को बोले तुम जाओ वहां पे तो दरवाजा अपने आप खुलेगा, तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। आजकल देखो मेट्रोज में या ऐसी स्मार्ट बहुत सारी चीजें आ गई है जहाँ पे हम जाते हैं तो हमारा जो प्रेजेंस है वो मूवमेंट सेंस करके डोर्स आर गेटिंग ओपन ऑटोमेटिकली। सो दिस इज लाइक मैजिक, मैं जा रही हूँ और दरवाजे ओपन हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ लाइट ऑन ऑफ हो रही है, दैट इज सेंसिंग द presence of the person which is coming in that particular periphery. So this is like magic. So दिस ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चर्ड नॉर्मल। लोगों को बोलना कि ये सब एकदम नॉर्मल है, ये अभी देखोगे, तुम लोग जाओगे दरवाजा खुलेगा, तुम लोग जाओगे लाइट ऑन होगा या ऑफ होगा, तुम लोग बोलोगे टर्न ऑन द लाइट या फिर क्लैप एंड देन लाइट आएगी या जाएगी। सो लोगों को बताना कि ये सब चीजें हैं जो अभी तुम लोगों की लाइफ में आने वाली है, होने वाली है, मैजिकल चीजें। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चर्ड नॉर्मलसी फील्ड। दिस इज द टेक्निकल कंसेप्ट फॉर दिस मैजिक एज मेटाफॉर, कि लोगों को बताना कि ये जो चीजें आपके आसपास हो रही है मैजिक से कम नहीं है। सो टेक्नोलॉजी इज बीइंग कंपेयर्ड विथ मैजिक। नाउ लेट अस सी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें लगती है कि मैजिकल है। तो स्मार्ट असिस्टेंट्स, हे गूगल, हे सीरी, हे एलेक्सा, एकदम आसानी से हम लोग बोल देते हैं एंड देन दे आर डूइंग द वर्क फॉर अस। सो स्मार्ट असिस्टेंट्स आर देयर दैट फीलिंग लाइक जीनीज, कि जैसे अलादीन के पास अपना एक जिन था, वो जो बोलेगा वो करता था। तो वी हैव द सेम टाइप ऑफ मैजिकल असिस्टेंट्स। Walking close to the door and door is opening, that is also the example of magic as metaphor. Fitness bands, smart watches that we wear, which counts each and everything which is happening in our body. Each and everything means the pulse rate, blood pressure, anxiety, stress that is being calculated. Then cards, that tapping cards, NFC cards. We just tap the card on the machine and the payment happens. Smart lights, smart fridge, voice to text. We are speaking, and small children, you see how smart they are becoming because of the technology. They do not know. Now they want to see Peppa Pig. They do not know how to type it. And they say Peppa Pig, then it plays Peppa Pig. So it is like very magical. Our voice is getting converted into the text. We can type also. No? We speak and the things are getting typed on the screen. That is also like magic. होम ऑटोमेशन, हमने ऑलरेडी होम ऑटोमेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। देन फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी, फोन को देखोगे तो फोन अनलॉक हो जाएगा, फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है, जैसे देखा तुमने फेस स्कैन हो गया, देन द फोन इज गेटिंग अनलॉक्ड। Magical. All these things which we are doing every day are feeling like magic, and that is why the same thing you can explain in your answers if you are writing anywhere. Magic as metaphor. The same examples you have to write about the technology which feels like magic. Now, the next concept is, we have studied this in previous lecture also, privacy in IoT, because when a lot of data are being shared across the devices, privacy is the issue. So you have to have the concern when you are sharing the data with some third party. Data misuse should be minimized. You should have the encryption, decryption techniques, and that's why so many platforms nowadays, they are giving the end-to-end encryption. Privacy is being given. So because of this risk of data leakage or any type of malpractices which are being done for any kind of benefits, that we will talk later also in coming videos. So privacy is the biggest issue, but you have to balance it, the functionality and privacy, because if we want to have services, we have to have
some sacrifices for it. So maybe we are sacrificing our data for that. Data means the information that we are having. So privacy can be the issue when you are using IoT based devices. But when you are on the side of developers, you have to take care of the data which your users are sharing with you. That is our responsibility, being a technical person. Okay. The next thing is keeping secrets or data protection. So please do not collect the unnecessary data. Whatever required from the user, only you try to collect that data only. Never store the passwords of your users in any plain text formats. You have to use the encryption techniques, hashing techniques to store the passwords in some hidden way, so that even if they get captured by some person, unauthorized person, those things should not be misused. So encryption is required, and data minimization means कम से कम data लोगे तो उसका risk भी कम होगा. So only take or only collect the data which is really needed. Otherwise, don't collect that data from the users. So that is again the responsibility of the designers and developers. What data we are collecting from the users and how we are protecting their data. So that is keeping secrets or data protection. Now the next concept is वेब थिंकिंग फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस. मतलब हमारे जो भी डिवाइसेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. वो तो हमने देखा ही है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, अभी भी देखा कि जो भी डिवाइसेस है वो अगर स्टैंड अलोन है, मतलब अकेला मेरा वॉच है, तो वो शायद इतना काम ना कर पाए मेरे लिए. बट इफ दिस वॉच इज कनेक्टेड टू माई मोबाइल, or that mobile again connected to servers, and then they are communicating with each other, and then they are analyzing the data, then they can take some smart decisions. So this is all like web, means they are connected to one another. But ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते. तो मेरा वॉच अकेला है तो भी फिर भी वो कुछ ना कुछ काम करेगा. मेरा मोबाइल अकेला है तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही करेगा. So it is not like completely you have to be dependent on one another. That is the concept here. In connected systems, all components should not be tightly linked to each other. मतलब एक दूसरे के साथ इतने भी कनेक्टेड नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे के बिना काम ना कर. ह्यूमन बींग्स में भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है. The internet works well because it is made up of many independent small devices that work together without needing strict control. कि एक दूसरे के साथ वो है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते. Each component should do one job well, work independently, be easy to reuse, replace or modify. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक खराब हो गया तो उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं आ सकता. ये भी चीज हर जगह पे एप्लीकेबल है. एक खराब हो गया तो दूसरा है. Use standard protocols instead of creating new ones. Whichever networking protocols are there, that should be used. You should not use anything which is non-conventional. So go with the standard things which are there for connecting the devices. So this idea of connection is called as loose coupling. Means loose connection कि ये लोग connected है, but अगर इनका एक के साथ दूसरे का connection miss भी हो गया तो भी वो लोग काम कर सकते हैं. So this idea is called as loose coupling, and it ensures flexibility, easy updates and better system growth over time. कि ये independent है तो definitely अपने आप से भी अच्छा काम कर सकते हैं. So this concept is called as web thinking for connected devices. Loosely connected devices are loosely connected, small pieces but loosely connected. Now the next concept is graceful degradation. Now we can see there are some systems in this diagram. तो एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा जो है वो काम करेगा, वो नहीं है तो कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहेगा. तो सिस्टम कंटिन्यूज वर्किंग व्हेन पार्ट फेल्स, मतलब कुछ खराबी उसमें आ जाती है, काम कंप्लीटली रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ उसका काम होता रहना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज ग्रेसफुल डिग्रेडेशन. Just now we discussed one example of Google Meet, for example, lecture is going on, video stops, but then also voice keeps on going on. So that is the graceful degradation. Devices are getting smaller functionalities, but functionalities are there. They are not going anywhere. They are not stopping the work of any user. And that's why it is called as graceful. ये अच्छा है, degradation है, but अच्छा है.
नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट अफोर्डेंसेस। सी, तुम लोग कोई भी फोन लो, कोई भी कंपनी का किसी भी टेक्नोलॉजी का फोन यूज करो, बट उसमें ये दो बटन तुम लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉलिंग के लिए वो ग्रीन वाला ही रहेगा, और या फिर कॉल एक्सेप्ट करने के लिए, और डिक्लाइन के लिए, कट करने के लिए हमें रेड बटन ही मिलेगा। ये बटन तो सेम ही रहेंगे। कोई वीडियो हम लोग अगर प्ले कर रहे हैं तो ये ट्रायंगुलर बटन हमारे लिए है ही है, प्ले बटन, पॉज बटन, ये सेम ही रहेंगे। कोई भी तुम लोग वीडियो प्लेयर यूज करो, सिग्नल्स के कलर्स है वो भी सेम ही रहेंगे। तो ये अफोर्डेंसेस का मतलब है यूजर्स को हम लोग क्लूज दे रहे हैं, उनको कोई मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनी इंस्ट्रक्शन सेट्स, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ओनली बाय सीइंग द थिंग्स दे विल कम टू नो what is the function of this particular component. So affordances means what? Giving the clues about how to use an object. तो ये बटन है, मैंने अगर रेड प्रेस किया तो ये बंद हो जाएगा, शायद शायद नहीं होगा ही बंद, क्योंकि रेड का काम ही यही है कि स्टॉप करना चीजों को। ग्रीन का काम है, ग्रीन मतलब बटन चल रहा है, तो इसका मतलब मेरा कुछ सिस्टम ऑन है या मैं कॉल रिसीव करूंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यूजर्स। देन यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि नॉब को टर्न ऑन टर्न ऑफ करना, ये हर जगह पे सेम ही होता है। अगर वो डिफरेंट हुआ तो फिर यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कहीं पे हम जाते हैं, जो नॉब्स या टैब्स है यहाँ पे, वाटर टैब्स, अगर वो डिफरेंट है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको यहाँ पे घुमाओ या यहाँ पे घुमाओ, कैसे करूँ? तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, फॉर दैट पर्पज दीज अफोर्डेंसेस आर really important, necessary. It says that the good designs that you are making, they are self explanatory. उनके लिए कोई भी मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीजों का क्या क्या काम हो सकता है। देखो कितनी चीजें हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी टेक्नोलॉजी इजीली यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अफोर्डेंसेस की, देख के उनको पता चल जाता है कि इसका क्या काम हो सकता है। Okay, and this concept was given by Donald Norman. This was the person who coined this word affordances. Affordances means cues, giving the clues about the use of a particular technology. To avoid the confusion, main purpose is कि users को हमें confuse नहीं करना है, वो easily technology को use करे. That is called as affordance. The next examples are given here. This is applicable in physical and digital interfaces. Just now we studied icons and gestures. They reduce the need for instructions. देख के पता चलता है कि क्या करना है. Improves user experience, कि users को अच्छा लगेगा कि मुझे कोई confusion नहीं, मैं easily use कर रहा हूँ. So that is why affordances you have to take in consideration when you are designing any IoT based device, be it the hardware or be it the software or UI, user interface design. So these all concepts we studied today, the ubiquitous computing or UBCOM, the technology which is embedded everywhere, working silently in the background, everywhere, present everywhere. कि मेरा मोबाइल है वो मेरे साथ हर जगह पे जा रहा है. So it is the example of UBCOM. Calm and ambient technology, technology that informs without disturbing users. वो अपना काम एकदम शांति से कर रहा है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा है यूजर्स की लाइफ में. That is calm and ambient technology. Magic as a metaphor, using familiar ideas to explain and accept new technology. Technology को हम लोग compare कर रहे हैं with magic. Then privacy and keeping secrets. You have to take care of the data which your users are sharing with you. So that is privacy and keeping secrets. Small pieces loosely joined, loosely connected. We have seen the web thinking. So many components can be there, so many devices can be there, connected to one another, but loosely connected means अगर उनका connection miss भी हो गया, loss भी हो गया, then also they are going to work and easily scalable. मतलब तुम लोग और ज़्यादा devices add भी कर सकते हो. Graceful degradation, even one part of the system fails, the things will keep on working. The complete system should not fail at the same time. That is called as graceful degradation. So I hope you understood whatever concepts we covered today. If you have any type of doubt, please comment below the video. I will be answering each and every query, each and every doubt which is by any of you people. So please comment about whatever things you have to tell me.
If you like this video, please hit the like button and share this video with your friends who may need this video. And if you have not subscribed yet to this particular channel, please do subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. God bless you all.